कम्युनिस्ट थे, उसकी भी एक वजह हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी जो राइटिंग है, मैं आज जो भी कुछ लिखता हूँ इन सब शायरों को पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कहाँ तक पहुँचा हूँ मालूम नहीं है। तो उनकी शायरी से आपकी अदाकारी में कुछ असर हुआ? देखिए, मेरी पैदाइश एक ऐसे माहौल में हुई. I was raised in a family where it was believed that art should be used as an instrument for social change. कि कला को एक सामाजिक बदलाव के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. So my father with his work as a poet and my mother as an actor with the work that she was doing in theatre, that's what I grew up believing. Let me tell you a little bit about myself. 9 साल की उम्र तक हम लोग एक कम्यून में रहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के कम्यून, which basically meant कि 8 कमरे थे, in which there were 8 families who were living, and the room was only 225 square feet, so it was a really small room. There was one common bathroom and one common toilet for 8 families. 8 families जो हैं एक बाथरूम और एक टॉयलेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी गरीब होने का एहसास नहीं हुआ. क्योंकि जो हमको वहां से मिला, जिस तरह की सोच, जिस तरह की विचारधारा, the fact that you have to concern yourself with the fate of the less fortunate than you. So, women's emancipation, speaking for the downtrodden, giving respect to the person who's working, India's celebration of her composite culture, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, that was a given. That was what we grew up with. But I didn't understand what a poet meant. मुझे ऐसा लगता था कि शायर का क्या मतलब है, कवि का क्या मतलब है. वो तो दिन रात बैठ के कुछ लिखते रहते हैं. He doesn't go to office. वो जो है, he doesn't do anything that other fathers do. तो मुझे ऐसा लगता था कि I'm sorry to interrupt you. आपने कहीं कहा था कि मतलब पोइट्री लिखना, जो शायरी करना है, वो फुल टाइम जॉब नहीं है. फुल टाइम जॉब नहीं है, मुझे ऐसा लगता था. तो मुझे लगता था कि वो तो फिर एक तो कुर्ता पजामा पहनते हैं, फिर जो है वो I never used to call him daddy, I used to call him Abba. Then he didn't wear trousers and a shirt and he didn't go to office. So a poet was a euphemism for somebody who did no work. That's what I thought. फिर जब मैं स्कूल गई और वर्ड्सवर्थ और कीट्स और टेनिसन, इन सब लोगों को मैंने जाना, तब मुझे what it meant to be a poet, I started respecting that. Also, my father, I used to think, was very strange, because I was 7 years old and I was sent to a convent school. तो बाकी सब लोगों की तरह, बच्चों की तरह, मैं भी चाहती थी कि I should have a doll with blue eyes and golden. ये एक चीज़ मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे कि अम्मी जान जो हैं, वो है तो शौकत आज़मी के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन कई सुना कि वो शौकत कैफी लिखती थी जी, और कैफी साहब तो कैफी आज़मी हो ही गए जी. तो ये दोनों के नाम में कैफी होने में कोई उल्फत वाली बात, कोई ऐसा कोई नहीं. असल में मम्मी तो आजमगढ़ की नहीं थी. She was from Hyderabad, from Andhra. So she said, when I'm not from Azamgarh, why should I call myself Azmi? So that's why her name, her maiden name was Shaukat Khanum, and then she became Shaukat Kefi. She didn't use the word Azmi. तो अब नाराज मत होइएगा, मैं आपको कोई, उन्होंने बोला मैं नाराज होती तो भी खूबसूरत लगती हूँ, तो हो सकती है. इजाजत ऐसा मौका नहीं. ये क्या है कि आपकी वालिदा ने एक शायर से शादी की और आपने भी एक शायर से निकाह की,
तो ये महज इत्तेफाक था या शायरी से मोहब्बत का इजहार? देखिए, मेरी माँ ने मुझे बोला था, शायर से कभी नहीं, शायर के चक्कर में कभी नहीं फंसना, वो खूबसूरत शेर लिख के तुमको फंसा देंगे, तुम ये करना नहीं है. And then I did the exact opposite of what she told me, which is fall in love with a poet. The jokes apart, poetry is something that I grew up with. I have a great respect for the spoken word. और अगर लोग मेरे सामने, if they mispronounce a word, I find it very, very painful. Especially today's language, where they've changed the spelling, they've changed the pronunciation, and now तो मतलब OK को they say only K. भाई अगर आपको OK बोलना तो you write O, but why K? I don't understand. So what's happening with language today? That's something that concerns me, because the spoken word is very important to me, because I grew up in that. लेकिन अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं इसमें, तो मेरा तो लफ्ज तो सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा है. नहीं, मगर आपके लिए बिल्कुल जायज है, क्योंकि आपकी ये जबान नहीं है और आप उसको सीखने की आपने इतनी मेहनत की है, वो बहुत अच्छी. लेकिन अगर आप फिल्म एक्टर हैं, हिंदी फिल्म एक्टर हैं, तो हिंदी जबान आप बोल रहे हैं, तो यू बेटर से खूबसूरत. यू कांट से खूबसूरत. You better put the nukta where that nukta is supposed to be. My husband is Javed Akhtar. A lot of people call him Zaved. So they say, why do you call him Zaved? He said, poor thing, they're trying to pronounce my name correctly. So they put a nukta where that none is required. So there's a lot of confusion about how khoobsurat, khoon, khamosh, the dot has completely disappeared from the language. That I feel bad about. ये आपकी ही नहीं, हम भी जो हमारे नेपाली भाषा में या कोई नेवारी भाषा में या किसी मतलब लैंग्वेज में बात करते हैं, तो अभी ये थोड़ा इधर भी ऐसा ही हाल है. बहुत तकलीफ होता है मुझे. तो आगे बढ़ते हैं. एक बार बच्चन साहब जो है, बच्चन साहब बने बिग बी, जो है बच्चन साहब महान की शूटिंग में काठमांडू आए थे. तो हमारे एक्टर थे, विश्व बच्चन उनका नाम है, वो और हम सब जाके उनके यहाँ इंटरव्यू करने गए थे. हम लोग फिल्मी मैगजीन कर रहे थे. मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया, हुआ कुछ नहीं. बस से उन्हें वो लोग कहीं दूर कहीं जाके मतलब मंदिर में जाके वो आए हुए थे, थके हुए थे, लेकिन टाइम दे दिया उन्होंने. तो मेरे वो दोस्त विश्व बच्चन जी ने पूछा उनको लास्ट पे एक क्वेश्चन. उन्होंने पूछा कि आप तो कवि के पुत्र हैं, है ना, तो कविता लिखने का शौक आपको चल रहा है नहीं? तो बच्चन साहब ने अपनी माँ की तरफ, तेजी जी के तरफ देख के तुरंत जवाब दिया. वो बहुत हाजिर जवाबी है. मेरी माँ कहती है कि घर में एक कवि काफी है. लेकिन आपके घर में तो दूर दूर शायर हैं. तो मुझे बहुत पूछते हैं कि आपके पिताजी शायर, आपके पति शायर, आपके फादर इन लॉ शायर, तो आप शायरी करती हैं? तो मेरा जवाब होता है नहीं, मैं इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती हूँ. That is the better thing to do. I don't get into that competition. और अब शायरी तो आप नहीं करती हैं, आपने बोल ही दिया. तो लेकिन एक्टिंग के अलावा आपने गाने गाए हैं. बहुत पहले आपको कैसेट एक आया था अंजुमन बोल के HMV से, वो खरीद के लाके, क्योंकि आपके फैन तो थे ही, तो गाना भी सुनने को मतलब दिल किया तो लेके आया. बहुत पैसा महंगा था, 50 रुपीज़, और मेरे पास नहीं था. जोड़ के है ना. तो जाके, और उसमें क्या है कि वो शायर थे शहर यार मेरे ख्याल से. तो एक बहुत खूबसूरत गाना था जो भूपेंद्र साहब से आपने गाया था. इतने ऐसा लाइन कि मैंने अभी तक ऐसा मैं लिख नहीं पाया. अगर लिखूंगा तो उनका नकल वो कैसे सोचेंगे, तो नहीं किया. वो लाइन क्या था कि गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, गुलाब जिस्म का यूं ही नहीं खिला होगा, हवा ने पहले तुझे और मुझे छुआ होगा.
इससे भी ज्यादा अच्छी लाइन जो मुझे लगती है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो कहता है कि ये सोच सोच के थकती नहीं है रात मेरी, ये सोच सोच के थकती नहीं है रात मेरी कि तुझको सोते हुए चांद देखता अरे हूं। बाप रे, ये क्या है? Too beautiful. या ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लाइन था सच में। अब कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने मिलियन बताते हैं तो अब फिल्म में आते हैं। आपकी पहली फिल्म अंकुर में ही आपको नेशनल अवार्ड मिल गया। कम उम्र में ऐसे रिवॉर्ड मिलने से आपकी जेहन में किस प्रकार की तब्दीली आई? आगे आपने तो आसमान को छू लिया, क्या उसकी तस्वीर आपको तभी दिखाई दी थी जब अवार्ड मिला? नहीं, असल में it was so surprising to get the national award for the very first film that I did that it didn't really quite register with me at that time. मगर एक बात मुझे ऐसा लगता है फिल्म को लेकर कि फिल्म बहुत कोलैबोरेटिव मीडियम है। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दें if the part is not well written, if your co-actors are not telling the truth, if the editing is not correct, if the camera work is not correct, if the sound is not correct, if the lens in which you're being shot is not correct, it is dependent on so many other factors. एक्टर को सबसे ज्यादा तारीफ इसलिए मिल जाती है कि एक्टर सामने होता है स्क्रीन का, लेकिन खुद जो एक्टर है उसके दिल में बहुत इज्जत होती है अपनी टेक्निकल टीम के लिए कि ये टेक्निकल टीम पूरी काम कर रही है कि मेरी जो कमजोरियां हैं उसको छुपाए and enhance my strengths. So for me, film is a very collaborative medium, and the director is the captain of the ship. Stage, theatre is the actor's medium. Because see, when I am on stage, I could have rehearsed anything. You could have given me as many instructions as a director can give. But when I'm on stage, then it's a direct connection between the audience and me. So it is what I give to that part. And also what happens is theatre mein, you keep doing the same thing over and over and over and over again. तो वो mechanical होने लगता है. फिर what you do is आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज मैंने बहुत अच्छी की तो आप उसको imitate करते हो. कल मैंने अच्छा किया था, कल इस पे तालियां बजी थी तो आज मैं वही करूंगी. That means you are not in the moment. You are not reacting to the truth of today. You are reacting to the memory of yesterday. That is the wrongest thing for an actor to do, because you have to be alive, be in the moment. And that is the greatest discipline that an actor needs. You know, when people say that we want to be actors, what is the advice you would give us? लोगों के पास अलग अलग आइडियाज हैं एक्टिंग के बारे में. वो सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन ये रोल कितना अच्छा करता है, I should do it like Amitabh Bachchan. You've already cancelled what you are capable of doing at that time because you are imitating. But acting has to come from within you. The truth has to come from within you. It has to come from a whole lot of emotional memory that you can carry with you. Or emotional, just Stanislavski, I'm a Stanislavski student. That emotional memory can only come during the rehearsal. But at the time of the performance, it's that scene. You know, you can't, if you felt that, all right, you did a scene of anger with your brother, you had a very bad fight. And just now you're having a fight with a politician, for instance.
you cannot bring the anger that you felt with your brother to the scene with the politician, because that's not the truth. So it requires a lot of training and a lot of understanding of what the craft of acting is. That's what I think. थैंक यू। अब हम 1988 में जाना चाहते हैं, जब आपने जॉन स्लेसिंजर की फिल्म मैडम सुसात्स्का में काम किया था। एक फनकार को नई जगह में अनजाने लोगों के साथ काम करने में क्या क्या चीज़ से डील करना पड़ता है, मुश्किलें थी तो कैसी थी, और आसानी किस बात पे हुई? अगर इफ यू फील कंफर्टेबल देन प्लीज मैम, वी लव टू लिसन। You know, it was 1989, I think. So there had been very few instances of Indian actors actually going and performing on a Western screen. I was the only Indian in that whole unit. And it was a different way because everything is so organized. Everybody has their script. Everybody knows exactly what they have to do. So that wasn't in Hindi cinema. राजेश खन्ना और मैं एक सीन का पहला पेज कर रहे होते हैं, दूसरा पेज कादर खान जो कि एक्टर भी और राइटर भी है, वो किसी और स्टूडियो में बैठ के दूसरा पेज लिख रहे हैं। तो वी आर डूइंग द फर्स्ट पेज विदाउट नोइंग व्हाट द सेकंड पेज इज गोइंग टू बी। वी आर आल्सो डूइंग 2 films a day, so you're doing 7 to 2 one film, then you're going to another studio, then you're doing 2 to 10. So the requirement of Hindi cinema was just be able to speak your lines and that's about enough. That isn't what acting is about. That happens now because they've got a complete script, because they do workshops, they're giving time, everybody knows what they had. लेकिन मैडम सुजात्स्का का मैं एक आपको बताना चाहती हूँ, I was so impressed. There was a scene between Shirley MacLaine and myself. So they took Shirley MacLaine's shots first because she had to go off to see a play. They took her close-ups first, and then it became my time कि मेरा close-up करेंगे। तो imagine Shirley MacLaine इतनी बड़ी star, वो आके मुझसे कहती है, शबाना अगर मैं अपनी wig उतार दूँ, तो will you be thrown by? मैंने कहा why? So she said no, because I look completely different if I don't have the wig. And this is, she's not in the camera. She's just giving me the cues. So I said, you know, you must be joking. हमारे पास तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्कुल फ्लैट आवाज में इस तरह से डायलॉग बोलता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप मुझे क्यों दे रहे हो? So this discipline of the co-star and the actor and the respect for your co-star is something that I learned in Madam Suzatsky. It's something that I carry in my heart. थैंक यू। आपको हिंदुस्तानी सिनेमा में वन ऑफ द वेरी फ्यू आइकॉनिक आर्टिस्ट के रूप में मैं लेता हूँ, जिसने उस जमाने में जिंदगी की कुछ अनछुए पहलू, अनसोची और चुनौतियों से भरा बेमिसाल किरदार को बखूबी निभाया। मिसाल के तौर में अर्थ मंडी पार जैसे फिल्मों के नाम लेना चाहूँगा, जिससे अपनी जिंदगी से दूर तक रिश्ता ना हो, वैसी किरदार में जान डालने के पीछे क्या मुश्किलें हैं, एक फनकार को किस तरह की होमवर्क करना पड़ता है? See, I think acting is a very rewarding profession because आपको मौका मिलता है अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने का, उनकी दुनिया को इनहैबिट करने का। अब जब मेरी पहली फिल्म थी अंकुर, I had never been inside a village in my life. So it was the first time I went to a village. So I had to learn so many things to be able to do that. And when I played Lakshmi's reality became part of Sabana Azmi's personality. So it's an addition to me that I am playing these different characters and their life becomes an experience that I feel which I wouldn't have if I was not an actor. But for that, जो जरूरी है कि शबाना आजमी को अपने आप को constantly develop करना पड़ता है। तो मैं बोलती हूँ एक्टर के लिए जरूरी है कि आप प्ले देखें, फिल्म देखें, किताब पढ़ें,
म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाएं, आर्ट देखें, सब कुछ आपकी समझ में भी नहीं आएगा. But it is very important that you expose yourself, because somewhere along the way you start understanding what excellence is. And when you get enriched and when you have a wider experience of life, then you can add to that character. So it's a double relationship that you have. Now, how does an actor do that? When I was doing a film called Mandi, in which I play the madam of a brothel, तो मैं 3 different brothels में गई. एक मुंबई में एक जगह मुझे फारूक शेख लेकर गए. फारूक शेख को ब्रॉथल्स के बारे में इतना क्यों मालूम था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो मुझे लेकर गए थे वहाँ. तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियाँ जो है ना, वो फिल्म स्टार्स की तरह ड्रेस होती हैं, ऐसी रेड लिपस्टिक लगाए हुए, बिल्कुल अलग. They were trying to be a Hindi film star. Then after that I went in Delhi with Amrita Singh's mother, Roxana. She took me to GB Road. Over there I found that they were completely different. It was a completely different culture. It was the kind of culture where it was believed that young men should be taken to the Tawaf so that they learn about manners and things like that. तो एकदम पुराने स्टाइल का वो था. उसके बाद फिर हम लोग हैदराबाद में गए, शाम में निकल और मैं, और एक लड़की वहां बैठी थी. मतलब एक मेकअप का उसका हिस्सा भी नहीं था उसके फेस पे. एक छोटी सी कद की, she was wearing a nylon sari and a white blouse and with a head down like that. And then somebody said, she'll dance for you. So I said, okay. So there's a song of mine from a film called Fakira. दिल में तुझे बिठाकर कर लूंगी बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी. To that song, she danced, and it was the most vulgar interpretation of Puja Karungi that I've ever seen in my life. And I couldn't believe कि ये लड़की जो ऐसे बैठी हुई थी, वो किस तरह के gyrations कर रही थी. I said, oh my God. And then again she went and sat like that. So I asked her, I said, why do you do this? So she said, you'll come behind and see. I said, yeah. So it was like a Hindi film. She had her mother who was very ill. She had a father who was paralyzed, and she had 8 brothers and sisters. She was the sole earning member. And that's why she was doing it. So now when you are playing that character, you have to have some empathy for the character. You can't just choose that character, say that, all right, I will observe you and then do my own thing. So in that process, when I was working and when I was seeing her gestures and all that, I was also observing what her reality was. There was a film that I did called Par. So in that, the sweeper woman, मैं उसको देखती थी वो किस तरह से झाड़ू लगाती, किस तरह से बैठ. तो फिर हमारी दोस्ती हो गई क्योंकि I was using her as a model. तो फिर उसने कहा कि आप मेरे घर चलेंगी, will you come to my house? I said yes, of course. And I went to a house and I felt I had never seen poverty of that kind in my life, because there was this completely airless room. It had no water, it had no electricity. There were people stuffed in that room, and I felt that she was being so generous to me. और उसके circumstances कितने खराब थे. और फिर I felt कि अगर मैं वापस चली गई और मुझे एक national award मिल जाए performance के लिए जो मिला, और फिर मैं उस जैसी लड़की की जिंदगी बदलने के लिए कुछ नहीं करूं, तो जब हम लोग दोस्त बने थे तो मैंने उसके साथ झूठ खेला था. और इस तरह से जो स्लम्स में काम करना मैंने शुरू किया, वो उस फिल्म की वजह से, और उसको मैंने बेस करके अपनी बनाया था. That's how it happened. No, please.
are my parents too. आई थिंक आपको सुनते ही जाए, मैं कुछ तो बोलूँ, लेकिन अभी जो वाक़या आपने सुनाया, ये आप ही कर सकते थे। जिस टाइप के, जिस किस्म के इंसान आप हैं, जिस किस्म का रूह आपका है, तो यू आर नॉट जस्ट स्टार, एन एक्टर, यू आर वेरी, मैंने जो पहले बोला था आपको, ब्लेस्ड एंड काइंड सोल, आई वाज ट्रू। See, for an actor, I think becoming a star should just be a byproduct. It can't be what you are looking for. Because I tell you what happens between an actor and a star. When you're an actor, your resource base is life itself. आप रिक्शे वाले से बात करते हैं, आप जो भाजी जिससे खरीदते हैं उससे बात करते हैं, you speak to the bus driver, you are connected to life. When you become a star, you can't afford to do any of that. So then in concentric circles you get, so there is the chowkidar, then there's the security guards, then there's the makeup guy, then there's a hairdresser, then there is the manager. So before life can touch the star, 8 sets of people have to be bypassed. And the star becomes completely isolated in that world, and the connection with the world completely disappears. So you, after you work, then in the evening you meet people who say, "Wah wah, what a star you are." Your connection with life starts getting completely gone, and that cannot be good for any artist. Because for an artist, whether you are a poet or you are an actor or you are a painter, you have to be connected to life. आपकी पूरी inspiration आपको जिंदगी से मिलनी चाहिए. So the danger of becoming just a star and not going back to what it means to be an actor can be very, very fatal for all artists, not just for actors. I think that's very important. Thank you. अच्छा, जोर से ताली बजा सकते हैं. साक्षी के हमारे दोस्त हैं हमारे दिल्ली में, उन्होंने अपने किसी उसमें उसको लिखा था, तो मैंने बहुत साल पहले उसको पढ़ा था उसको. तो आपको क्या लगता है? I have no problems with that because it's perfectly fine. अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि कला मनोरंजन का एक जरिया है और वो सिर्फ मनोरंजन करना चाहते हैं, वो मीनिंगफुल कला नहीं करना चाहते, आई हैव नो प्रॉब्लम. मगर फिर रीडिफाइन एंटरटेनमेंट. मनोरंजन का मतलब इतना वल्गर, इतना क्रास, इतना टेस्टलेस होने की क्या जरूरत है? मनोरंजन कैन आल्सो बी वेरी नाइस. So we must redefine मनोरंजन. But I cannot say that what I think cinema should be, everybody should say that, then I'll become a dictator. People, the audience should have a choice. Like an audience, the reader decides, I want to read Shakespeare, or I want to read a racy novel, or I want to look at comics. It's the reader who's deciding. So we must give the audience choice, and then the audience selects what it wants. But if you want people to appreciate good cinema, to appreciate good theatre, तो स्कूल में आपको ये करना होगा. ये नहीं हो सकता है कि आप जो है कुछ इस बच्चे को अच्छे सिनेमा के बारे में बताएं ही नहीं, और फिर at the age of 20 you expect him to become a very discerning student who only likes. So if we understand in our educational curriculum how important art is for the overall development of a person, and give it the same kind of weightage that we give studies and we give sports, that's what we need to do as a society and as a government. मैं हमारे यूनिवर्सिटी पास आउट अनुपरा के साथ बार बार यही बात कहता हूँ कि पोइट्री एप्रिसिएशन, पेंटिंग एप्रिसिएशन एंड थिएटर एप्रिसिएशन, फिल्म एप्रिसिएशन का कोई चीज़ जो है वो
स्कूल से ही लोगों को Sure. सिखाना चाहिए, Sure. ताकि वो जाके डिसाइड करेंगे कि क्या मनोरंजन है ना, और कौन सी फिल्म गुड है, कौन सी बैड है। तो थिएटर आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है आपकी आज की तारीख में? कुछ लोग कहते हैं कि ये बस इलिट लोगों के लिए लग्जरी और एंटरटेनमेंट है। Different kinds of theatre, no? Different kinds of theatre. Whether because my father, when he was the head of IPTA, he said, why must people always come to a proscenium theatre to watch plays? Why can't we go to the community, and why can't we do it there? So that kind of street theatre, etc., is a completely different thing. But I think the challenge for theatre is cinema. क्योंकि डायरेक्टली ऑडियंस ये सोचती है कि अरे ये मैं थिएटर में 5 लोगों के साथ जाऊंगा तो मेरी फैमिली का बहुत नुकसान हो जाएगा, इससे बेटर है कि मैं OTT पे फिल्म देख लूं। तो व्हाट डज थिएटर नीड टू डू? थिएटर नीड्स to distinguish itself from cinema, because as a medium, theatre has the possibility that I just stand like this and the audience can get convinced that I'm a tree. You can't do that in a film, but you can do that in theatre, because it's a willing suspension of disbelief. We need to go back to that. Instead of just competing on realism, we need to go back to the medium of theatre. So the person who's watching film gets to watch something different and then starts coming to theatre for that. So I think those elements we need to develop much more. That's what I think. थैंक यू। ये एक थिएटर आर्टिस्ट को मतलब कैसा शौक रखना चाहिए, मुझे जरा इसकी क्यूरियोसिटी हुई है। जैसे कि लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग से उनका कितना करीबी रिश्ता होना चाहिए, और एक आर्टिस्ट को अपने हुनर में गाढ़ापन लाने में किस प्रकार की प्रैक्टिस करना चाहिए। शायद मेरे साथी कलाकार इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, बिना उनकी इजाज़त पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं एक प्ले करती हूँ, ब्रोकन इमेजेस। इट्स अ 1 woman play. It's a conversation between a fixed television screen. So there are 2 sisters talking to each other. So one is a real person and the other is a previously recorded image. But the previously recorded image is also moving and looking. So the timing has to be perfect, because if I'm looking here and the girl, the live person is talking to me, it can go completely wrong, right? So technically it has to be perfect. Every single time before I do a show, I do the entire rehearsal. That means when I give 1 performance, I give 2 performances. Because for me to manch jana jisko kehte hain na, to be perfectly, because I don't do it every single day na. When it comes back, then I need to get back into the rhythm of it. And very strange things happen. Once, I was doing this play, Broken Images, और वो जो प्रोग्रामर है वो मेरे पास आके कहता, and it was in 1800 audience का seating capacity. He says, "Madam, सिर्फ 20% लोग अंग्रेजी जानते हैं, the play is in English." तो मैंने कहा, isn't it a bit late in the day to tell me that? तो मुझे वो कहता है, आप कुछ आप हिंदी में कर दो ना। मेरे जी के एक थप्पड़ मारो उसको, कि उसको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या रहा है। Brother, you won't believe I went and did the entire play in Hindi, translating on my feet. So this woman was talking in English and I was talking in Hindi to her. Now that happens in the spur of the moment, and because you're ready, you can do that. Today if you tell me do it, I won't be able to do it. But when you are in the moment, to be in the moment for something, when you're doing it over and over and over again, needs riyaz. It needs riyaz.
you can never afford to get mechanical. You can never believe, I know it. I know the audience is going to laugh over here. I know the audience is going to do this, that. You can never afford to do that because you will be proved wrong. And a thing that my mother told me, which I really would like to tell all of you is, कभी-कभी actor को stage पे पता चल जाता है you've lost the audience, कि the audience is not with you. So what the actor does is becomes desperate to try and get the audience's attention. So we'll do something extra. My mother said, never do that. Go back to the truth. Go back to the truth and concentrate completely on the truth, and the audience will come back. If you make a desperate attempt to get the audience, you lose it. So that's being in the moment, I think, is very, very important. फकीरा में शशि कपूर के साथ Be humble. That's very important. You know, you cannot say that I'm the master, I know everything. You'll fall flat on your face. So a certain humility is very important. मैंने पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ आप बोलते रहे और मैं सुनता रहा. अच्छा, एक बार राजकुमार साहब ने, मैं ट्विटर में देखा इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने एक मतलब इंटरव्यू में कहा कि जानी टोटल रोल शायद किसी भी अदाकार को अभी तक नहीं मिला जिसे टोटल रोल कहते हैं. The total play of human personality, physical, emotional, mental and spiritual. तो उस हिसाब से तो यही कहेंगे कि अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं कर पाए और शायद हमारे रास्ते में आएगा भी नहीं. मुझे बहुत अच्छा लगा था ये. आपको कैसा लगा? No, but the fact is that it can't come in only one role, no? It will come, these emotions which you want to experience, they will come through different roles. If you are in search of that one role that will give you the chance to display every single skill of yours, it's not going to happen. You have to snatch moments and you have to learn from those moments. I find it very easy to work with somebody like Nasiruddin Shah, because when I'm acting with him, his eyes are telling the truth. तो जब वो सच बोल रहा है तो मेरे लिए सच बोलना ज़्यादा आसान हो जाता है. तो your co-actor is a very, very important part. Very, very अब हम थोड़े मतलब इसको अंजाम देते हैं. एक दो सवाल मतलब क्यूरियोसिटी है अभी, और मेरा एक अभी बताएंगे बाद में. आपने प्रूव कर दिया है कि स्काई इज नॉट द लिमिट. ये तकदीर है, मेहनत है, या क्या है? No, I think my career has really been about being lucky for being at the right place at the right time. Really, I have been very lucky. But society keeps changing, and it is a very interesting point now that roles are becoming available for older people and older women. Because normally in Hindi cinema, by 35 you were already too late. Then you were just given a side role. But today, I'm getting some of my best parts, and that's I'm very fortunate to be able to do that. So I think it's a mix of many things, and because I'm not a bad actress. You're super, you're super, more than super. मैले तपाईँहरूलाई पनि एउटा केही कुराकानी गर्ने मौका दिनुपर्छ. हामीले त्यही प्रकारले आयोजना गरेको थियो यो कार्यक्रम. तर त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो दुईटा इन्सिडेन्ट चाहिँ छ अरे, जुन चाहिँ यहाँहरूलाई पनि सेयर, यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन. ये अभी जो हम सुनाने जा रहे हैं यहाँ के किसी को भी मालूम नहीं है. टीम के जो मेंबर ऑर्गेनाइजर जो भी, किसी को भी मालूम नहीं, कभी बताया नहीं किसी को. इतने प्यार से रखा उस चीज़ को, सच में. लेकिन उससे पहले हम एक आपको सुनाना चाहते हैं. आप शायद कोई अवार्ड
डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में नेपाल में कभी पहले आई थी शायद, तो वहाँ पे हमारे एक बहुत जाने माने बहुत ही प्यारे म्यूजिक कंपोजर गोपाल योंजन वहाँ पे ही अवार्डेड बाई नेशनल अवार्ड। सो कोई एकदम वो पूरा नेशनल ड्रेस पहन के कोई वो सरकारी ऑफिसर जो आके उनको उनका अवार्ड दे दिया, तो घर जाके वो उनकी बीबी अभी भी हैं रेंचिनी योंजन, तो उनके साथ बहुत नाराज हो गए वो। तो क्यों, क्या हुआ, नेशनल अवार्ड मिला है तुमको नाराज क्यों हो? नहीं, वहाँ पे सबाना आजमी जी बैठी हुई थी, तो उनके हाथों से वो अवार्ड मुझे देने में उन लोगों को क्या तकलीफ थी, ये उन्होंने सुनाया था मुझे। सुने थे पहले? अब मेरो पर्सनल बता सुनाउँछु म। हमको राजकुमार साहब की आदत लगती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है हम बोलने में। तो लेकिन कपिल शर्मा जी को अच्छा नहीं लगता है, हम बोलेंगे तो कितने सारे लोग हैं, मैं बोलो यार, है ना? तो हंसाउँदैछु क्यों? Let me come to that point. मैं 16 साल का था, तब से मैं अकेला रहा इस शहर में, कोई नहीं था। तो मुझे ये लगता था कोई सपना की, मतलब सपनों की कोई राजकुमारी जो है वही मेरी उद्धार मतलब रेस्क्यू कर सकती है। सच में कह रहा हूँ, मेरा दिमाग ही ऐसा था कि अब वो आके मुझे रेस्क्यू करेगी और मुझे खाना पीना ये जो इधर उधर जो भी है, मुझे कुछ कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ख्याल कहाँ से आया मुझे पता नहीं। तो उस हिसाब से एक वो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। तो आपकी जितनी भी फिल्में देखी तो उसमें योर कैरेक्टर वाज सो स्ट्रॉन्ग, तो मुझे उसमें राजकुमारी दिखाई दी। तो मतलब आप इनकी देखभाल करो। ये तब की बात थी। I'm also joking. पता नहीं इन लोग क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है कि नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर तो गुजर रहा है। उसके बाद में क्या हुआ कि तो इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जो है इसकी रूह पाक है ना, और इस लड़के का जो है मतलब ये, इससे कोई गॉडेस कोई नहीं हो सकती है, ऐसा मेरे जेल में आया। तो क्या हुआ कि मैंने पैसा था नहीं, कहीं से कुछ कमाई होती है, क्या होती है, मतलब वो क्या कमाई था, कभी कभी फाके करने भी पड़ते थे। तो कहीं से जाके ये ऐसे ही पेज में 4 पेजेस लेके आया और एक पेन लेके 4 पेज तक मैंने पता नहीं क्या लिखा। अब पूरे एक फैन है लेकिन कोई वो भी कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट भी कर रहा है ना, कि ये है, पता नहीं क्या लिखा होगा मैंने। और मैंने सोचा वो आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा होगा, मतलब वो पेजेस, फोटोकॉपी नहीं था, अगर था भी तो मैं कैसे उसको फोटोकॉपी करता। तो जाके बाद में जावेद साहब के साथ आपकी शादी हो गई। उस टाइप का आशिक नहीं था, आशिक था। उससे क्या पता चल चुका था कि वो जो मैंने खयाली पुलाव जो बनाए थे वो कोई काम की चीज नहीं थी, लेकिन उस चीज को आज के तारीख में आपके सामने जो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए क्या है कि आई एम एन एथियस्ट, लेकिन आज मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने क्या है कि आप गुस्सा नहीं किया, आप गुस्से में तो मेरे ख्याल से बिफोर आई गो टू द फ्लोर, मुझे कैफी साहब की एक नज्म
सुनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। और ये मुझे मेरी दिली ख्वाहिश है। And thank you for giving me the permission. तो क्या है कि अगर त्यो प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर एकजनाले भनिसकेपछि दोहोऱ्याएर नगर्दैन किनभने हामी थिएटरको दुनियाँमा छौँ। यहाँले कुरा बुझ्नु होला। प्रश्न एकदम छोटो र सजिलो, कुरा मन पऱ्यो भने ताली बजाउनु होला। मलाई एउटा प्रश्न बाँकी मलाई त जहिले सोधे पनि भयो। अच्छा, मैंने जो है ना ये कहा था कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ऑडियंस के साथ वार्तालाप करें और जो उनको सवाल पूछने वो सवाल मैं उनका जवाब दूं। तो मुझसे कहा था कि नहीं, ये लोग बहुत झिझकते हैं, दे वेरी शाय, ये लोग नहीं पूछेंगे। तो मैंने कहा मैंने हमेशा ये देखा है कि पहले जब मैं कहती हूँ कि प्लीज़ ऑडियंस कुछ कहें तो सब लोग ज़रा झेपते हैं ये वो, उसके बाद हर इंसान को 2 क्वेश्चंस पूछना होता है। तो अब जो है आप में से कोई निकलकर हिम्मत करके जरूर पूछिए। यस, वेरी गुड, गो अहेड। हेलो माइक आयो के रे उहाँले भन्नुभएको कुरा बुझिहाल्नु भयो। मैले यहाँ सुनेको कुनै भाइलाई प्रश्न तपाईँबाट सोध्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ कि जानुभयो? माइक उहाँलाई दिनु। माइक काम गरेर बिना माइक को बोल्दा हुन्छ? ओके, हेलो, आई एम वेरी एक्साइटेड। रेडी? No, you say the question, I'll repeat it. हाँ बोलिए। Industry is floundering, and there is a film from the south like Kantara which is becoming a very big hit. So are the Hindi cinema people thinking about what is it that they wanted to give? Is that what you're saying? Okay, so now ये जरूर हुआ है कि pandemic में people's habits, movie going habits have changed completely. Because the only form of entertainment that they had was the OTT platform. Theatre was closed, cinema was closed, poetry was closed, nothing was happening. So they had started watching films on OTT all over the world, more so in India. And now after that, what has happened is people are rejecting a lot of the movies. And so the filmmakers are feeling that maybe we need to make the big spectacle. People should only go for the big spectacle. But I don't think that's true, because I believe that अगर कोई कहानी है जो आपके दिल को छूती है तो वो लोग देखेंगे. So there is definitely a lot of ideating going on of what we need to do in films. But I really think that the world is moving towards gender empowerment. And if we can start making films with women as the central characters, that's something that the audience is willing to watch. I think we should start thinking about that and making more films that are women oriented. That's what I think. Yes, please, there. पहले तो मैम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। Thank you. तो इजाजत 4 लाइन पढ़ना चाहते हैं कि अर्ज किया है कि अपने आप को भागते हुए देखा है, अपने स्वाभिमान को नंगा होते देखा है,
माँ बाप को शून्य गहरे में रोते हुए देखा है, सपनों को बिछड़ते देखा है, दोस्त को छूटते देखा है, मोहब्बत को गैरों की बाहों में लिपटते देखा है, शराब को सहारा बनते देखा है, सिगरेट को जिस्म से खिलवाड़ करके सहा है, हमने जिंदगी को बहुत करीब से राख होते देखा है। दुखी आपको है हाँ ठीक है ऐसा है मगर थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचिए ना अमूमन हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। क्वेश्चन It's not a question. It's just, I feel so emotional tonight just having you in front of me. You've always been an inspiration for a lot of the actors around the globe, I guess. And my heart is actually racing right now. I'm really nervous. I just want to take your blessing. And trust me, I've never been on theater. It's been 15 years of movie journey for me, never been on theater. I just want to share the stage with you and just take your blessing. Small something for you from my side. It's Nepali. It's Swadeshi. Made in Nepal. Okay, thank you. मलाई चाहिँ के छ Hi, ma'am. Namaste. I'm Suresh, and I have been doing the movies for like 8 years now. I'm an actor. I have a question. Since you're an actor and activist as well, I'm in a point of my life where I think acting is about believing somebody else's reality completely, and activism is, I think, about having your strong reality and something you believe in. So these two are contrasting with each other. So how do you think an actor carry an acting and activism at the same time in the right way? You know, that's an excellent question. Did everybody hear that question? Yeah. Everybody heard it, yeah? It's a very, very good question because the question basically says to women, I feel very strongly against religious fundamentalism. I feel very strongly about the oppression that the less privileged people feel for. And I have used that, whether through film, whether through my activism, or whether representing India in the United Nations. The concerns are the same. So for me, it is seamless. It need not be. It can be different. But see, the skill of an actor is I should be able to put the words if I were. If I were a streetwalker, if I were a queen, if I were a slum dweller, if I was a noble person, I should be able to do any of the things. That's your discipline. And that is extremely important for you to do. So you have to learn to inhabit both worlds. Your world of activism be totally true to what it is that you believe. And don't look at it as a contrasting thing. Look at it as something that will enhance your life. Because when you're playing a character that you would not meet in real life, then imagine how much experience you're gaining because of that. And some lesson from that you can learn. So don't see it as a contrast. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू अब हामीसँग समयको एकदमै पाबन्दी भएको भएर अभिषेक ल सम्पदा अभिषेक पहिला सम्पदाले के भन्यो त्यसपछि अभिषेक Yeah, I'm yeah, very he is happy the to see a first. lot of girls are raising their hands. That's very good. सम्पदा सम्पदा गो हेड अभिषेक ल अभिषेक सर्टमा छोटोमा टाइम छैन Firstly, to the panel, I'm very excited to say something. I saw
नेपाली भन्नु ट्रान्सलेट गरिदिनु राइट मैले सक्दिनँ होला कार्तिक नाचको बारेमा मलाई होइन त्यसको फिल्मको बारेमा सोध्नु मन छ कोही छ ल म भनिदिन्छु हिन्दीमा म हिन्दीमा भनिदिन्छु ओके ब्रदर क्यारी अन कार्तिक नाचको बारेमा हो अनि म त्यतिकै हेर्दा गएको थिएँ अनि पछि गएर थाहा भयो मेरो कास्टको मान्छेहरू चलाउँदो रहेछ अनि त्यहाँनिर मैले एक्टिङ देखेको ये कार्तिक नाच के बारे में है ऐसे मैं देखने गया था और बाद में पता चला कि ये मेरे बारे में ही है राक्षस होता है उसको His translation is so good. यदि उसने कुछ एक चीज नहीं किया तो सच में मर जाएगा एक कल्चर प्ले भाई अब सवाल पर ऐसे तो सारी रात डाल जाएगा रे. Oh, he's an excellent interpreter. Yeah. क्या अगर मैं इस स्टेज पर खुद काम करूं तो ये मेरे लिए कितना पॉसिबिलिटी है अगर नहीं है तो वहां पे कैसे हो रहा है I don't know how talented you are and whether you will be able to do it, but you're absolutely right that anything to do with myth and what you do as a ritual is also obviously a point of theatre, because you want to evoke a certain response from the audience. So your question is right. Whether you have the capability of doing it, I don't know. The last 50% of that. 50% of that would be taken by the writing itself. 25% would be the director. Maybe 30% would be the director, and 20% would be with me. And I'm saying it without any false modesty. You could share some legend experiences since you worked with legendary directors like Shyam Benegal and Vishal Bhandwal. So what kind of interactions with those? You see, with Shyam Benegal, I've done a lot of films with Shyam Benegal. I started with my first film. And what I find very, very attractive about Shyam Benegal is he doesn't tell me what to do. Okay? He leaves me to interpret it my way. But I know that he will stop me if I'm making a mistake. He will not allow me to make a fool of myself. So that gives me the confidence to pull myself out of my comfort zone and try to do something which maybe would go wrong. Sometimes you're so shy that it can fall completely flat. Let me not do it. I know that this is what I should do. That, I think, for a director is very good. You know, that you should be able to inspire the actor. You should never show the actor how to do it. Never. That's not the director's job at all. The director has to inspire within the actor the abilities to stretch herself. And if she's going wrong, then curtail that. That's the best relationship that I have with Shyam Benegal. I'll tell you a very nice, sweet incident. When I first did
अंकुर, तो मैंने बताया था ना कि मैं सीधा सिटी से पहली बार गांव में गई, और गांव में मैं जो ना आई कुडंट सिट ऑन माय हॉन्चेस, जमीन पे नहीं बैठ सकती थी. तो शाम ने मुझे बोला कि बट अ लॉट ऑफ इट इज सिटिंग ऑन योर हॉन्चेस, सो यू बेटर प्रैक्टिस फॉर दैट बिकॉज अदरवाइज इट लुक वेरी ऑड. So then he said, all right, you sit on the ground and eat your food. We'll all be sitting on the dining table. You sit and eat there. So about 4-5 days I sat with great difficulty with some stool, etc., etc. Then finally I got used to sitting on my haunches. So on about the 6th day, some boys from a college had come to the set. And they looked at me sitting over there and eating. And they said, where is the heroine of the film? So I said, she hasn't come today. Chutti hai. So, what are you doing? I said, I'm the Aya. Ah, theek hai, they said, and they went away. Then Sham was looking at me and he said, you've managed to convince those people that that is the person you are, so now you can come and sit and eat with us at the dining. Thank you. Yeah. You've already asked a question. We can only ask people. Yes, yes, go ahead. Ask a question. Okay. So as a woman, every time I find this struggle of articulating and I find it very silent in that. So how do you kind of consciously practice like making sure that you for what you really want to do? You know, I grew up in a particular family where I was advised that I should be able to tell what my heart says. But it doesn't mean that just because you've got the space to say you should become an iconoclast and you should just break every single image that there is. You also, as you grow older, when you're young and you have greater fire, you want to be stronger. And then you realize after a while that, you know, you need to pick your battles. You can't make the whole world an enemy, because when you are trying to break certain barriers, it is very important that you develop solidarity with people who think similarly with you. And I think today the space for a woman to come out and actually say what she says is a lot better, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने वो रास्ता इस रास्ते पे चले हैं और आपके लिए मशाले लेकर जाएं. तो आप जो है सिर्फ कॉन्ट्ररी होने के लिए हर बात को कंट्रोवर्शियल बोलने के लिए मत करिए. तो बट पिक योर बैटल्स. जो आपके लिए नॉन निगोशिएबल है उसको नॉन निगोशिएबल रखना पड़ेगा. मुझे तो फिल्मों में बहुत सारे रोल्स को मना करना पड़ा, बहुत सारे रोल्स जिसमें ऐसा लगता था कि द वुमन इज प्लेइंग, the film is endorsing that the woman is secondary to the man. I refused a lot of money. I refused to do those films. You have the courage to say no. That's what you need to develop. The courage to say no. Thank you so much. म दयालु मान्छे हो, तर के छ भन्दाखेरि यहाँ प्रब्लम के छ, हामी उहाँलाई डिनरमा लिएर जाँदा त्यो दोकान बन्द गर्ने. सरी प्लिज. Yeah, go ahead. Blue cap. Question is, you told initially आपने बोला कि you've inspired poets in your life rather than being a poet yourself. So as a muse or as an inspiration to those poets in your life, have you ever felt exploited? Might be the wrong word. Have you ever felt unjustified as a muse or as an inspiration that you? I've not been a muse. It was only a joke. Or it's my life's ambition that that's how they should think of me. I'm no muse. कुछ नहीं. That's मेरे दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. He's angry now. Thank you so much for such a fun, informative session. अब चाहिँ ढिला र एकदम ढिलो भइसकेको छ, त्यही भएर खत्म करने के लिए तो मुझे अपने बाप का एक शेर ही सुनाना चाहिए. बहुत सारी शायरी की है उन्होंने, औरतों के लिए कहा है, मकान के लिए कहा है, बट आई कीप इट सिंपल. एंड आई थिंक कि अगर हम सब लोग आज के दौर में
अगर उस बात 2 शेर सुनाऊंगी। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। That's a nice thing. And then another one which might be a little more difficult to understand is कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। मिलाऊं अनि हाम्रो सेसनको होस्ट विप्लव प्रतीक अहिले पनि म्यामले हाम्रो NIT फेस्ट अब अरू हुने पनि बाँकी छ। सबैलाई सक्सेसफुल बनाउन हेल्प गर्ने स्पोन्सरहरूको पनि नाम लिन चाहे मैले।